Okay. ऐसे चला ये फ्लाइट मोड पर डाला है. Hello, Assalamu alaikum, Namaste, good afternoon. Welcome to Learn English with KMD Get, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Hello, good afternoon to every man, JKV. Good afternoon to all and sundry, all you people out there. This is your very own KMD Yunus from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Well, I request all you people out there to join me in large number. Come on. I have decided to go live today. Come and join me in large number. Come and join me in large number. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. What are you people waiting for? Hello, hello, hello. Good afternoon to every man, Jake of you. Good afternoon to all and sundry. Good afternoon to one and all. How are you people doing today? How are you people doing today? Well, the answer is I am doing pretty well today. I am doing pretty well today. How are you people doing today? I am doing pretty well today. Hello, hello, hello. I'm back again. This is your very own KMD Yunus, spoken English trainer, professional spoken English trainer from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier in flesh today. Come on, what are you people waiting for? All you people out there, I request every man, Jack of you to come and join me in large number. Come on, answer the simple question of mine. How are you people doing today? I am doing pretty well. I am doing pretty well today. तो आइए जुड़ जाइए. सलाम अलैकुम, नमस्ते. लर्न इंग्लिश विद KMD के प्लेटफॉर्म से. वेल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि सर थोड़ा बहुत उर्दू में बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत तेलुगु में बात कर लीजिए, पूरा इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो रहा है. तो आज मैं ज़्यादातर हिंदी में या हो सका तो थोड़ा बहुत तेलुगु में और थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करने की कोशिश करूंगा. तो आइए जुड़ जाइए लर्न इंग्लिश विद KMD के प्लेटफॉर्म से. मेरा नाम है KMD यूनुस और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं लर्न इंग्लिश विद KMD के प्लेटफॉर्म की तरफ से. आइए जुड़ जाइए. आज मैं लाइव हूं. अगर आपकी कोई डाउट्स है या फिर आपका कोई क्वायरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. आप अपनी मैसेजेस भेज सकते हैं. गुड आफ्टरनून टू मैन जेकब यू. ओके, मैं कह रहा हूं कि एवरी मैन जेकब यू. मैं कह रहा हूं कि ऑल एंड सनड्री. मैं कह रहा हूं कि वन एंड ऑल.
इन सब चीजों का मतलब क्या है? जब मैं कह रहा हूं कि गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल और गुड आफ्टरनून टू मैं जेकब यू, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप में से हर एक को मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून है, आप में से हर एक को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम है, आप में से हर एक को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग है, ये गुड आफ्टरनून है, ये गुड इवनिंग है, ये गुड नाइट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक को, तो आप ये एडवांस एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं जो मैं अभी यूज कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून टू एवरी मैन जेकब यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल इन सैंडविच, गुड आफ्टरनून टू एवरी मैन जेकब यू एक एडवांस एक्सप्रेशन है। गुड आफ्टरनून टू ऑल इन सैंडविच, ऑल एंड सैंडविच, SUNDRY, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। अगर आप एडवांस साउंड करना चाह रही, अगर आप सोफिस्टिकेटेड साउंड करना चाह रही, अगर आप नेटिव स्पीकर्स के जैसा साउंड करना चाह रही, या फिर अगर आप फ्लुएंट साउंड करना चाह रही, तो आप इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, ये ठीक है। अगर एक इंसान को, अगर आप ग्रीटिंग कर रही, अगर आप एक इंसान को जो है गुड मॉर्निंग कह रही, तो ये गुड मॉर्निंग ठीक है। गुड आफ्टरनून भी ठीक है, गुड इवनिंग और गुड नाइट भी ठीक है। बात सिचुएशंस ऐसे होती हैं जहां पे एक से ज्यादा इंसान को आपको गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है, या फिर गुड आफ्टरनून कहना पड़ता है, या फिर गुड इवनिंग या गुड नाइट कहना पड़ता है, तब आप ये एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकब यू, गुड मॉर्निंग टू all in sandwich, इस तरीके से आप कह सकते हैं। Good morning to every man Jacob you. Shamshad, hello Shamshad, thank you very much for joining me live today. I really appreciate you joining me today. Thank you very much. How are you doing today, Shamshad? How are you doing today? Please answer this simple question of mine. How are you doing today? Please answer this question by typing I am doing pretty well today. I am doing pretty well today. Thank you very much. Hello, hello, hello. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Come and join me in large number. All you people up there, what are you people waiting for? Don't be chicken. Don't be scared. Don't panic. Come and join me in large number. आ जाइए, जुड़ जाइए, ज्यादा तादाद में जुड़ जाइए। मैं KMD यूनिस लर्न इंग्लिश विद KMD के प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। आपकी कुछ क्वायरीज है, आपके कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, और अगर मुझसे हो सका तो मैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि गुड मॉर्निंग कब बोला जाना चाहिए, और गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकब यू कब बोलना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है, एक एडवांस एक्सप्रेशन है, एवरी मैन जेकब यू। आप लोग सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है वो है कि आप बार बार ये जो सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है, इसको बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। जितना आप इसे रिपीट करेंगे उतना जो है इससे फायदा मिलेगा। जी, आपने मुझे बिल्कुल सही सुना। आप इसको जितना रिपीट करेंगे उतना आपको इससे फायदा होगा। आप अगर एक अकेले इंसान को एड्रेस कर रहे हैं, आप अगर एक अकेले शख्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो ठीक होगा कि आप गुड मॉर्निंग बोले और गुड आफ्टरनून बोले और गुड इवनिंग या गुड नाइट बोले। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा इंसान को एड्रेस कर रहे हैं, एक से ज्यादा इंसान को जो इंसान से जो है मुखातिब हो रही, तो तब आप जो है ये एडवांस एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकब यू, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप में से सबको, हर एक को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है। बस टाइम ऐसा होता है कि 40 की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर 50 की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर 100, 150, 200, 250 या फिर 300 या कभी कभार 500 या 1000 की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। तो
उस टाइम पे अगर मैं स्टेज पे हूँ, अगर मेरे हाथ में माइक है, तो मैं ये नहीं कह सकते कि गुड मॉर्निंग, मुझे कहना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। एक ऑप्शन है हमारे पास। आप जितना इसको रिपीट करेंगे उतना आसान होगा। मैं बोलते रहता हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास जब मैं टीच करता हूँ या फिर बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता रहता हूँ कि बार बार वो चीज को बोलनी चाहिए, जितना बोलेंगे उतना फायदा होगा। स्टेज से हाथ में माइक लेके मैं बच्चों को बोल सकता हूँ कि गुड मॉर्निंग, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक या दो या तीन बच्चों से मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से एड्रेस करूँ, तो मैं बोलूंगा कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जी बिल्कुल सही सुना आपने, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं कभी भी जो है गुड मॉर्निंग नहीं कहता, मैं कभी भी जो है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर आप गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग देखेंगे तो गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग है GOODMORNING। तब में ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ग्रीटिंग है गुड मॉर्निंग, तब जब ये मैं स्पोकन इंग्लिश में यूज करता हूं तो ज्यादातर जो है गुड मेरा गुड बन जाता है और मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग बन जाती है, यानी कि MORNIN के पास मैं रुक जाता हूँ, G के पास मैं नहीं जाता हूँ, और GOOD को जो है मैं GOOB की तरह प्रोनाउंस करता हूँ, और मैं बोलता हूँ बड़े फास्ट तरीके से, बड़े बड़े दमदार तरीके से मैं कहता हूँ कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये भी बिल्कुल गलत होगा। अगर आप इस तरीके की इंग्लिश बात करें तो बिल्कुल गलत होगा कि इतनी स्लो स्टाइल में आप कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे जो है स्पोकन इंग्लिश ट्रैक को फॉलो करना चाहिए। मैं बार बार मेरे लाइव सेशंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो है दो पहलू है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो है दो चेहरे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो है दो ब्रांचेस है, जो कि एक है रिटन इंग्लिश और दूसरा जो है स्पोकन इंग्लिश। गुड मॉर्निंग जो है एक लिखने का तरीका है, ये स्पोकन इंग्लिश ट्रैक के नीचे आता है। अब इसको अगर फास्ट करके रिटन इंग्लिश, सॉरी, गुड मॉर्निंग जो है एक रिटन इंग्लिश तरीका है, रिटन इंग्लिश ट्रैक के नीचे आता है। अगर आप इसको फास्ट करके बोलना चाह रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में आ जाता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं बता रहा था कि एक इंसान को अगर आप एड्रेस कर रही हैं, एक इंसान से अगर आप मुखातिब हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग। अगर आप एक से ज्यादा इंसानों को जो है एड्रेस कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं तो तब आप कह सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पहला ऑप्शन हमारे पास है गुड मॉर्निंग टू वन ऑल। दूसरा ऑप्शन है गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकबी, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सन्ड्री। ये जो है ये सारे के सारे जो है एडवांस एक्सप्रेशंस है जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की इंग्लिश में आप यूज करें। कोशिश ये करें कि आप अपनी लैंग्वेज को जो है सुधारने की कोशिश करें, आप अपनी लैंग्वेज को जो है संवारने की कोशिश करें, आप अपनी लैंग्वेज को जो है कलर्स ऐड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि देखो जब हम 5 साल के थे या 10 साल के थे, जिस तरीके की लैंग्वेज जब हम 5 या 10 साल के थे तब बोला करते थे, उसी तरीके की लैंग्वेज और उसी सलीके की लैंग्वेज आज भी आपको बोलनी चाहिए। ये तो कहीं भी ऐसा रूल किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। जैसे जैसे इंसान मतलब की उम्र बढ़ती है, उसका तजुर्बा भी बढ़ता है, उसका सलीका, रहन सहन का ढंग, उसका तौर तरीका सब कुछ बदलता है। इसी के साथ आपकी लैंग्वेज भी बदलना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करे कि सर ज़्यादातर इंग्लिश में हो जा रहा, सर लाइव प्रोग्राम जो आपका जो भी लाइव टेलीकास्ट है ज़्यादातर इंग्लिश में हो जा रहा और बहुत मुश्किल हो रहा आपको फॉलो करना। नहीं, ये बात मैं बताते चलूँ कि मुश्किल कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती है।
हर चीज, देखो, हर चीज मुश्किल है। जी हाँ, हर चीज मुश्किल है। Good afternoon, Salim. Good afternoon to you too. Thank you very much for joining me live today. I really appreciate you joining me today. Thank you very much. Thanks a lot to Shamshad. Thank you very much for joining me live today. And thank you, Salim, for joining me live today. देखिए, अभी आप लोगों ने सुना कि मैं इंग्लिश में बोल रहा था, फिर पीछे से जो है मैं हिंदी में स्विच ऑन हो गया। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरी स्पीड जो है बिल्कुल स्लो है। जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ और मेरा फ्लो जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। ये इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ करने से और इंग्लिश में बात करने से जो है मुझे बहुत आसान लगता है इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, जबकि मेरी खुद की मदर टंग में जो कि उर्दू है या फिर थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकते हैं। तो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करें और मुझे कॉल्स भी आए कि सर गुलिश्ता या फिर गए 3 या 4 दिन से जो है आप लाइव कर रहे हो, आप स्टूडेंट से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको लाइव देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है वो है कि आपकी लैंग्वेज जो है बहुत फास्ट है, आपका फ्लो जो है बहुत फास्ट है, आपको कैच करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरीके के सजेशंस और शायद कंप्लेंट्स कहूँगा मैं, इस तरीके की कंप्लेंट मुझे मेरे स्टूडेंट्स के पास से सुनने में मिली है। तो आज का जो लाइव सेशन है मेरा, वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। मैं बहुत कम इंग्लिश यूज़ करने वाला हूँ आज। ज़्यादातर जो है उर्दू में या फिर हिंदी में मेरा आपके साथ इंटरेक्शन होगा आज, और हो सके तो मैं थोड़ा बहुत तेलुगु में भी कोशिश करूंगा बात करने की। मुझे तो वैसे तो तेलुगु उतना मतलब ठीक तरीके से नहीं आता जितना कि उर्दू आता है। फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके जो भी क्वायरीज है, आपके जो भी डाउट्स है, उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर वापस जाते हैं। शमशाद, थैंक यू वेरी मच। Good afternoon to you, Shamshad, and thank you very much, Salim, for joining me live today. I really appreciate you joining me today. How are you people doing today? Please answer the simple question of mine. I am doing pretty well today. I'm going back to Shamshad and I'm going back to Salim, and I want both of you to answer the simple question of mine. How are you people doing today? And the answer is, I am doing pretty well today. Hello, hello, hello. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made magic here. This is a very spoken English. This is a very own spoken English trainer, spoken English coach, professional spoken English trainer, KMD unit from live. I've decided to get one today. Thank you very much for joining me. I want you people to join me in large numbers so that we can have friendly conversation and confabulation for the next an hour. All you people out there, what are you waiting for? Come and join me in large number. Come on, don't be chicken. Don't get nervous. Don't get apprehensive. Don't panic. Don't panic. Don't get apprehensive. Come and join me in large number. Let's have a conversation. All you people out there, hello, hello, hello.
हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून जी। आइए जुड़ जाइए लर्न इंग्लिश विद केएमडी के प्लेटफॉर्म से। तो मैं ये बता रहा था कि गुड मॉर्निंग जिस तरीके से बोला जाता है वो है रिटन इंग्लिश ट्रैक, और गुड मॉर्निंग को जो है बिल्कुल ही अलग तरीके से बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश ट्रैक के नीचे। रिटन इंग्लिश ट्रैक जो है एक अलग ही रास्ता है जो आपको किसी और मंजिल के पास लेके जाता है, और स्पोकन इंग्लिश एक अलग ही रास्ता है जो आपको किसी और मंजिल की तरफ लेके जाता है। अगर आप रिटन इंग्लिश ट्रैक फॉलो कर रही हैं, अगर आप रिटन इंग्लिश ट्रैक या रास्ता फॉलो कर रही हैं तो आप पहुंचते हैं रिटन इंग्लिश के पास। अगर आप स्पोकन इंग्लिश रास्ता फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मंजिल होगी स्पोकन इंग्लिश। गुड मॉर्निंग जो है, जो पूरा का पूरा बोला जाता है रिटन इंग्लिश में, जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो ये गुड मॉर्निंग बन जाता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी स्पेलिंग चेंज हो जाता है, GOOD गुड बन जाता है GOOB गुड, और MORNING बन जाता है MORNIN मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं ये आपको बता रहा था, कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल बोलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सन्ड्री बोलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकब यू भी बोल सकते हैं। ये जो भी एक्सप्रेशंस मैं यूज कर रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकब यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सन्ड्री, ये जो भी एक्सप्रेशंस मैं यूज करूँ इनको बोला जाता है कि एडवांस एक्सप्रेशंस। और ये एक्सप्रेशंस यूज करने चाहिए तब आप एक इंसान से ज्यादा एड्रेस कर रहे हो। अगर आप अकेले इंसान को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल गलत होगा कि आप कहें कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, क्योंकि आप एक इंसान को एड्रेस कर रहे हो। तो ठीक होगा कि आप कहें कि गुड मॉर्निंग, बस सिंपल सा। अगर एक इंसान है, अगर एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरी मैन जेकब यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सन्ड्री। सो अभी तो गुड आफ्टरनून बोलना है, तो मैं ये एक्सप्रेशंस यूज करके गुड आफ्टरनून बोल रहा हूं। देखिए किस तरीके से बोला जाता है। गुड आफ्टरनून टू एवरी मैन जेकब यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड सन्ड्री, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Hello, hello, hello. This is your very own professional spoken English trainer, KMD Eunice from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Come on, all you people out there, what are you people waiting for? Come and join a large number. Let's have friendly conversation and confabulation for the next an hour. I have decided to go live again. Come on, I really appreciate some shots for joining me live today. I really appreciate your joining me live today. I also appreciate Celine for joining me live today. Thank you very much. Come on, don't be chicken. What are you worried about? What are you apprehensive about? What are you waiting for? Come and join a large number. All the people out there. This is your very own KMD Eunice. Hello, hello, hello. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. चलिए आइए जुड़ जाइए स्पोकन इंग्लिश के प्लेटफॉर्म से, जुड़ जाइए मेरे से, जुड़ जाइए KMD यूनिस से, और चलिए सीखते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से कॉन्वर्जेशन की जाती है, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और सुधार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों के लिए ये होगा कि आप कैसे हो। बचपन से जो है हम लोगों को ये सिखाया जाता कि हाउ आर यू, ये सवाल जो है पूछने से लोगों से हमारे को जवाब मिल जाता है कि आप कैसे हो का जवाब मिल जाता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं एक बात बताते चलूं, दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, सारे लोग बदल रहे हैं, बहुत सारा बदलाव जिंदगियों में आ रहा है। पुराने ज़माने में जो है लोग
मिट्टी के घरों में रहा करते थे। पुराने ज़माने में लोग जो है टीवी वगैरह यूज़ किया नहीं करते थे। आजकल हर चीज़ जो है एडवांस हो गई है। तो उसी तरीके से हमारी बोलने में, हमारे चाल ढाल में, हमारे पहनने के तरीके में भी जो है बहुत सारा बदलाव आ गया है। तो मैं बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारी बातों से कि हाउ आर यू जो है आउटडेटेड हो गया है। अब बहुत कम लोग हाउ आर यू यूज करते हैं। हाउ आर यू के बारे में मैं और एक जानकारी देना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा कि हाउ आर यू ये 3 वर्ड्स हैं और इनको बोला जाता है रिटन इंग्लिश ट्रैक। अभी मैं बात कर रहा था रिटन इंग्लिश ट्रैक और स्पोकन इंग्लिश ट्रैक। आप लोगों को ये बताते चलूं कि आप बार बार मुझसे सुनेंगे कि रिटन इंग्लिश ट्रैक अलग है और स्पोकन इंग्लिश ट्रैक अलग है। ये बात जो है आप अपने दिमाग में एनग्रेव कर लीजिए, आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि रिटन इंग्लिश बिल्कुल ही अलग तरीका है और स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल ही अलग तरीका है। रिटन इंग्लिश एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम इंग्लिश लिखने की बात करते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग सीखने की बात करते हैं, इंग्लिश जो है हैंडराइटिंग के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश पढ़ने के बारे में बात करते हैं। जब हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, जब हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ अपना रुख करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि स्पोकन इंग्लिश में जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर तवज्जो करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, वो है इंग्लिश बोलने की तरफ। किस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। हाउ और यू जो है 3 वर्ड्स है और ये 3 वर्ड्स रिटन इंग्लिश में जाने माने जाते हैं। ये इंग्लिश लिखने का तरीका है जहाँ पे आपको ये 3 लफ्जों के जैसा दिखाई देंगे, हाउ और यू। स्पोकन इंग्लिश ट्रैक जो है बिल्कुल अलग है। ये जो 3 लफ्ज है हाउ और यू, ये बन जाते हैं हाउ यू। जी बिल्कुल सही सुना आपने जी। बार बार मेरे बात रिपीट करते जाइए, बार बार मेरे बात बोलते जाइए, जोर जोर से बोलते जाइए कि ये हाउ और यू नहीं है, ये 3 अलग लफ्ज नहीं है, ये एक लफ्ज है जो है हाउ यू। हाउ यू, हाउ यू। देखिए सुनिए, जब मैं हाउ और यू बोलता हूं और जब मैं हाउ यू बोलता हूं, जो टाइम मैं यहां पे लेता हूं और जो टाइम मैं यहां पे लेता हूं बिल्कुल अलग टाइम होता है। हाउ और यू समझिए कि मुझे यहाँ पे एक 5 सेकेंड्स लगे बोलने के लिए हाउ और यू। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रैक फॉलो करता हूं तो सेम हाउ और यू मैं बोलूंगा हाउ यू। जी मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 सेकेंड्स लगे होंगे या फिर 1 सेकेंड में मैंने कह दिया कि हाउ यू। हाउ और यू रिटन इंग्लिश ट्रैक है, हाउ यू स्पोकन इंग्लिश ट्रैक है। तो आपकी आदत ये होनी चाहिए कि आप रिटन इंग्लिश का रास्ता ना चुने, आप स्पोकन इंग्लिश का रास्ता चुने। आप ये सोचें कि इंग्लिश किस तरीके से बोला जाता है। स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल ही अलग चीज है। यहाँ पे हम लोग जो है ग्रामर से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को जो है स्पेलिंग्स की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जो है पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है किस तरीके से इंग्लिश में बात किया जाए। हाउ और यू बन जाता है हाउ यू। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, मैं अभी बता रहा था कि हाउ और यू या हाउ यू ये जो भी है आउटडेटेड हो गया है क्योंकि चीजें बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, उनका चाल ढाल, रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, सब कुछ बदल रहा है। तो आपकी लैंग्वेज भी बदलनी चाहिए। हाउ और यू से आप लोग जो है हाउ यू के पास आना है और हाउ यू से जो है आप लोगों को हाउ आर यू डूइंग टुडे की तरफ जाना है। देखिए सिंपल से सवाल है लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पे, हाउ और यू को जो है 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिए हैं मैंने यहाँ पे। हाउ आर यू डूइंग टुडे। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जी बिल्कुल सही सुना आपने। हाउ आर यू डूइंग टुडे। जरी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हाउ आर यू जो है एक 3 वर्ड्स का सवाल है लेकिन अब इसमें 2 और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं और वो है डूइंग टुडे। ये लिखने का तरीका है, देखिए जरा गौर फरमाइए कि ये लिखने का तरीका है हाउ आर यू डूइंग टुडे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश तरीका जानना चाहते हैं तो ये एक लफ्ज के जैसा बोलना चाहिए, जैसे कि हाउ आर यू डूइंग टुडे।
जी बिल्कुल सही सुना आपने। मेरी बात प्रैक्टिस कीजिए, मेरी बात जोर जोर से बोलिए, मेरी बात अट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से, बोलने से, जोर जोर से बोलने से जो है जबान साफ होती है, कानों को सुनाई देता है, और जबान जो है प्रैक्टिस करने से जो है और फ्लेक्सिबल हो जाती है और बिल्कुल आसान बन जाता है स्पोकन इंग्लिश में बात करना। तो आपका सवाल हो गया, हाउ आर यू डूइंग टुडे? जी बिल्कुल सही है आपका सवाल, हाउ आर यू डूइंग टुडे। और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ आज लाइव आके कि हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो इसका जवाब है आई एम डूइंग प्रीटी वेल टुडे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आई एम डूइंग प्रीटी वेल टुडे। 5 और 1 6 वर्ड्स है, 6 वर्ड्स है। ये है इंग्लिश लिखने का तरीका। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लिखने का तरीका बात करने के लिए तो नहीं लाइव आए हैं, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलने का तरीका सीखने के लिए लाइव आए हैं। और बोलने के तरीके में क्या हो जाता है, हाउ आर यू डूइंग टुडे जाके थोड़ा फास्ट करके हाउ आर डूइंग टुडे, और इसका जवाब बन जाता है आई एम डूइंग वेरी वेल टुडे, I'm doing very well today. I'm doing very well today. I'm doing very well today. Thank you very much. What about you? या तो how about you? आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। I am doing pretty well. Thank you very much. What about you? या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि I'm doing very well. Thank you very much. How about you? What about you? How about you? ये दोनों पूछ सकते हैं। जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? जी बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग कहते हैं कि कैसे हो, तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बताइए आप कैसे हैं। अगर इसको इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं How are you doing today? I'm doing pretty well today. Thank you very much. What about you? I'm doing pretty well. Thank you very much. How about you? Hello, hello, hello. Good afternoon to every magic of you, my dear listeners, my dear people out there. This is a very own KMD unit from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. I request all you people out there to come and join in large numbers so that we can have friendly conversation for the next an hour. I've decided to go live again today. I am from Learn English with KMD. Good afternoon to every magic of you. How are you people doing today? More me to welcome you to Learn English with KMD platform where learning English and speaking English is made much easier. I presume that everything is hunky-dory and tickety-boo with you. How are you doing today and how's your family doing? How are you doing today and how's your family doing? Ganesh R. Thank you, Ganesh. Thank you very much for joining me live today. Really appreciate it joining me. Thank you, Ganesh. Good afternoon to you, Dick. How are you doing today, Ganesh? I'm doing very well today. Thank you very much. What about you? Here is the answer, Ganesh. I want you to type this answer. I'm doing pretty well today. Thank you very much. How about you? Or I'm doing pretty well today. Thank you very much. What about you? Thank you very much. I'm joined by Ganesh, and here is a reply. Ganesh answers my question. He says, I'm doing pretty well today. Very good. I'm doing pretty well today. What about you, sir? Or how about you, sir? Ganesh, have you had your lunch? Answer the simple question of mine, Ganesh. Have you had your lunch? Have you had a breakfast? Have you had your lunch? Yes, sir, I have had my breakfast. No, sir, I have not had my breakfast. Have you had your lunch? Yes, sir, I have had my lunch. No, sir, I have not had my lunch. Or you could simply say, yes, sir, I have had. No, sir, I have not had my breakfast. Yes, sir, I have had my lunch. Well, I got the answer from Ganesh. Ganesh replies my question by saying, yes, sir, I have had my lunch. Ganesh, what are you up to? What are you up to? यहाँ पे एक सवाल पूछा मैं कि what are you up to? जिसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? Ganesh, what are you up to? దీని అర్థం ఏమంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నావు? దానికి అడ్వాన్స్ ఇంగ్లీష్లో అడగడానికి మనం సింపుల్గా చెప్తాం వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ. అది కాకుండా అడ్వాన్స్ ఇంగ్లీష్లో నేను అడగొచ్చు వాట్ ఆర్ యూ అప్ టు.
ఏం చెప్తున్నాను గణేష్? వాట్ ఆర్ యూ అప్ టు? దాని అర్థం ఏమి? నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నావు. अब आप क्या कर रहे हो, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं. तो आपका सवाल हो जाता है what are you up to? What are you up to? What are you doing? Come on, answer my question. Yes sir, I have had my lunch. Thank you Ganesh, thank you very much for joining me live today. Ganesh, how old are you? How old are you? నీ ఏజ్ ఎంత? How old are you? Answer, I am 20 years old, I am 20 plus, I am 25, I am 30. Answer. Ganesh, answer the simple question of mine. How old are you? How old are you? देखिए फिर चलते हैं वापस रिटन इंग्लिश ट्रैक की तरफ और स्पोकन इंग्लिश ट्रैक की तरफ. मैं बोल रहा हूँ कि how old are you? 4 लफ्ज है. रिटन इंग्लिश का तरीका अगर देखा जाए तो how old are you? There are 4 words. ये है रिटन इंग्लिश का तरीका. स्पोकन इंग्लिश में 4 वर्ड जो है एक वर्ड बन जाता है. How old are you? How old are you? How old are you? Sir, I am watching you live. Thank you very much. Ganesh, thank you very much for watching me live today. I really appreciate you joining me today. I really appreciate your answers. Ganesh replies another question of mine. I'm 18. Wow, that's wonderful, Ganesh. You are 18 years old. Well, let me tell you one thing, Ganesh. We have a specific word here to talk about all those boys and girls who are 18 years old. And that word is denarian. Yes, you heard me correct, Ganesh. Here is the spelling of denarian. I'd like to spell the word denarian for your convenience. D-E-N-A-R-I-A-N. Hope you got the spelling of denarian. D-E-N-A-R-I-A-N. Did you get the spelling of denarian, Ganesh? I want you to type the spelling of denarian right away. I want you to type the spelling of denarian immediately. D-E-N-A-R-I-A-N. What does denarian mean? Denarian means a person who is from 10 years, who is 10 years old, from 10 to 19 years of age. And if you are 10 to 19 years of age, then you come in the category of denarian. D-E-N-A-R-I-A-N. Yes, you got it right, Ganesh. Congratulations. Now you can type this message and let all the people out there know that you are a denarian. I want you to type this message and say, I am a denarian. Ganesh is a denarian. What exactly is the meaning of the word denarian? Denarian means from 10 years of age to 19 years of age. If you are 10 years old, if you are 11 years old, or 14 years old, or 15 years old, or 18 years old, or 19 years old, then you come in the category of denarian. Ganesh is denarian, and Ganesh, where are you from? Are you from Colonel? Where are you from, Ganesh? Are you from Colonel? Yes, sir, I am a denarian. Thank you very much. Really appreciate you joining me live today. I really appreciate all your answers. Thank you very much for joining me live today. This is your very own KMD unit from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. I'm joined by Ganesh, I'm joined by Shamshad, and I'm joined by Salim. I thank all you people out there. Hello, hello, hello. Good afternoon to every man, Jack of you. Good afternoon to all and sundry. Good afternoon to one and all. This is your very own KMD unit from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. I'm joined by Ganesh, and Ganesh is 18 years old, so Ganesh is a denarian. Ganesh is a denarian, and Ganesh has answered my question by saying, yes sir, I am a denarian. Ganesh, where are you from? Are you from Colonel? Where are you from? फिर चलते हैं वापस रिटन इंग्लिश ट्रैक की तरफ और स्पोकन इंग्लिश ट्रैक की तरफ. Where are you from? देखिए 4 वर्ड्स है. Where are you from? ये है रिटन इंग्लिश ट्रैक, जिस तरीके से रिटन इंग्लिश बोला जाता है और लिखा जाता है. स्पोकन इंग्लिश ट्रैक में where are you from बन जाता है where are you from? Where are you from? Where are you from?
Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? నాలుగు వర్డ్స్ ఉన్నాయి గణేష్. ఇది ఇంగ్లీష్ రాసే పద్ధతి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఇవి 4 వర్డ్స్ ఒక్క వర్డ్ లాగా రావాలా. కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పి వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ చెప్పకుండగా where are you from? 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 గణేష్ అట్టర్ చేస్తుండాలా, రిపీట్ చేస్తుండాలా, వింటుండాలా, ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలా, అప్పుడే ఫ్లూయెన్సీ అనేది వస్తుంది. గణేష్ చాలా చాలా మంచిగా టైప్ చేస్తున్నావు. దానితో పాటు చెప్తూ ఉంటే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. So thank you very much Ganesh, really appreciate your answer. Yes sir, I am from Colonel, I'm your high school student, right? Thank you very much. I'm extremely delighted, I am ecstatic, I'm on cloud 9 to see you joining me live every day. Well, Ganesh is a guy who keep joining me live every day. I really appreciate you joining me, Ganesh. I really love your consistency, the way you get connected with me live every day. Thanks a lot. Ganesh is a Denorian. He is 18 years old and he is native of Colonel. Tell us something about your parents, Ganesh. What does your father do for a living and what does your mother do for a living? Is your mother a homemaker? Is your mother a homemaker? Well, let me tell you one thing, Ganesh, that housewife is an outdated word. Housewife is an outdated expression. We don't use it anymore. We don't use it any longer. You better say, my mother is a homemaker. What does your father do for a living? And what does your mother do for a living? Or I could simply ask this question to you. What do your parents do for a living? Ganesh, if you're listening to me, I want you to pay close attention to the question formation here. What does your father do for a living? What does your father do for a living? Count cheste Ganesh, 7 words ఉన్నాయి. ఇది ఇంగ్లీష్ రాసే విధానం, ఇది ఇంగ్లీష్ రాసే పద్ధతి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వస్తే 5 + 2 7 words ఒక వర్డ్ లాగా వస్తాయి. అది ఏమంటే what does your father do for a living పోయి what does your father do for a living? 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 అదే క్వశ్చన్ నీ మమ్మీ గురించి అడిగితే what does your mother do for a living? What does your mother do for a living? డైరెక్ట్ నీకే అదే క్వశ్చన్ అడిగితే what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? మమ్మీ డాడీ కలిపి పేరెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే what do your parents do for a living? ఇక్కడ నేను does యూజ్ చేయడం లేదు. ఎందుకంటే I am not talking about your father, I am not talking about your mother, I'm talking about your father and mother. I'm not talking about third person singular, I'm talking about third person singular, third person plural, I'm sorry. So the question is, what do your parents do for a living? What do your parents do for a living? So answer the simple question of mine, Ganesh. Thank you very much for joining me live today. Ganesh has joined me today and he's a Denorian and he's from Colonel and he happens to be one of my previous students, one of my ex-students. He happens to be from the school where I worked earlier as a spoken English tutor for more than 7 years. Yes, you heard me correct. I worked at a private school as a spoken English tutor for more than 17 years. And all of a sudden, after the outbreak, the pandemic, I decided to quit my job cold turkey. Coming back to Ganesh, what does your father do for a living? And what does your mother do for a living? Is your mother a homemaker, Ganesh? If your mother is a homemaker, you better type this message. Yes, sir, my mother is a homemaker. Let me tell you one thing, that housewife is an outdated word. We don't use it any longer. So don't use housewife, you better say my mother is a homemaker. My father is a software engineer. Oh, very happy to hear that. Ecstatic and extremely delighted to hear that your father is a software engineer. Thank you, Ganesh. Thank you very much. Really appreciate your answer. Your father is a software engineer. Now, what does your mother do, Ganesh? What does your mother do? Does your mother do job? Does your mother do business, or she's a homemaker? What does your mother do? What does your mother do for a living?
What does your mother do for a living? Thank you very much. Hello, hello, hello. All you people out there, come and join me live today. This is a very own KMD unit from Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Well, I got the reply from Mr. Ganesh R. He says, my mother is a homemaker. Wow, really very lucky. You are very lucky because your mother is a homemaker. Ganesh, how many siblings do you have? Answer the simple question of mine. How many siblings do you have? Entamandi annadamulu unnaru. Kitne bhai behan hai? How many siblings do you have? ये है written English का तरीका, लिखने का तरीका, spoken English track. How many siblings do you have? Ganesh, how many siblings do you have? S-I-B-L-I-N-G plus S. That's the spelling of siblings. What does siblings mean? Siblings means your brothers, your sisters, your flesh and blood. Flesh and blood. Ganesh, I'm using an advanced expression here, flesh and blood. What does flesh and blood mean? I have no siblings, sir. Oh gosh. Sorry to hear that you have no siblings. Well, you are lucky. You're very lucky because you are an apple of your parents' eyes. Yes, you heard me correct, Ganesh. You are an apple of your parents' eyes. Well, going back to the previous expression, flesh and blood. Ganesh, I'm using an advanced expression here, flesh and blood. Now, Ganesh must be wondering what exactly is the meaning of flesh and blood. Flesh and blood means your own brothers and your own sisters. He is my flesh and blood. What does it mean? He is my brother. She is my flesh and blood. What does it mean? She is my sister. Let me tell you one thing, my dear Ganesh. Well, flesh and blood has got nothing to do with gender. Has got nothing to do with feminine gender or masculine gender or neutral gender. Right? You can use this expression to talk about a boy. You can use this expression to talk about a girl. He is my flesh and blood. What does it mean? He is my own brother. She is my flesh and blood. What does it mean? She is my own sister. Rather than using basic English, own sister and own brother, you could go with this advanced expression, flesh and blood. Is she your flesh and blood? Is he your flesh and blood? Or are they your flesh and blood? Yes, they are my flesh and blood. Ganesh, hope you got the meaning of this advanced expression, flesh and blood. I'm very sorry to hear that you don't have flesh and blood. You have no siblings. But you're very lucky, Ganesh. You're very, very lucky because you are an apple of your parents' eyes. Yes, you had me correct. Once again, I'm using an advanced expression here. You are an apple of my parents' eyes. Ganesh, I want you to type this and let all the people out there know that you are an apple of your parents' eyes. Please type this message and get connected with me. Yes, sir, I am an apple of my parents' eyes. I am an apple of my parents' eyes. Thank you very much. Hello, hello, hello. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Right. Come and join me in large number. Come on, all you people out there. What are you people waiting for? Don't be chicken. Don't get apprehensive. Don't panic. Come on. Come on, all you people out there. Come and join me. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Here I am in flesh again. I've decided to come live today. Thank you very much, all the people out there for joining me live today. I'd like to convey my heartfelt thanks to Salim, to Shamshad, and to one of my old students, Ganesh. I really appreciate his consistency. The way he comes and get connected with me whenever I go live is really commendable. Thank you very much, Ganesh. I really appreciate you joining me, and I hope you are learning something from these live sessions. Right? In my previous live session, remember teaching you a couple of words. Do you remember any of those words, Ganesh? I remember talking about paternal. I remember talking about maternal. I remember telling you people that the word paternal talks about the relatives of your father.
And the word maternal talks of the relatives of your mother. So from now on, henceforth, I want you people to be very, very precise and specific. If you are talking about your father's father, you better use the word paternal before grandfather, paternal grandfather, paternal grandmother, paternal uncle, and paternal aunt, maternal grandfather, maternal grandmother, maternal uncle, and maternal auntie. Remember, the word maternal talks about the relatives of your mother, and the word paternal talks about the relatives of your father. Paternal grandfather and paternal grandmother. I remember asking this question in one of my live sessions to this guy who's right over here, Ganesh, who's a Denarian, who's from Kano, who happens to be one of my old students, who happens to be from the school where I worked for more than 17 years as spoken English tutor. I happened to ask this question to Ganesh, how old is your paternal grandfather? Yes, I remember precisely. I happened to ask this question to Ganesh in one of my live sessions a couple of days ago. How old is your paternal grandfather? And remember, I also remember his answer. He answered my question by saying he's a retired officer. He's a retired person. Right. How old is your paternal grandfather? Thank you very much. Thank you very much for joining me live today. Come and join me in large number. All you people out there. आइए और जुड़ जाइए लर्न इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के साथ, जहाँ पे बड़े आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि स्पोकन इंग्लिश ट्रैक एक तरीका है और रिटन इंग्लिश ट्रैक एक तरीका है। रिटन इंग्लिश तरीका ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश लिखने के बारे में और स्पेलिंग्स के बारे में बात की जाती है, और स्पोकन इंग्लिश ट्रैक एक ऐसा तरीका है जहाँ पे इंग्लिश बोलने के बारे में बात की जाती है। तो हाउ आर यू जो है रिटन इंग्लिश ट्रैक है, हाउ आर यू बन जाता है हाउ आर यू डूइंग टुडे। रिटन इंग्लिश ट्रैक है हाउ आर यू डूइंग टुडे बन जाता है हाउ डूइंग टुडे। उसका जवाब होता है आई एम डूइंग प्रीटी वेल टुडे। जरा फास्ट करके आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग प्रीटी वेल टुडे, I'm doing pretty well today. I'm doing pretty well today. बोलिए, सुनिए, कानों से सुनिए, जबान से बोलिए और आंखों से देखिए। एक बात बताते चलूँ मैं कि जो भी चीज़ हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी कानों से सुनते हैं और अपनी ज़बान से बोलते हैं, वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में बहुत सालों तक जो है फिक्स हो जाती है। हम वो चीज़ उतनी आसानी से नहीं भूलते हैं जितनी आसानी से दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जुड़ जाइए अपने खुद के चैनल से जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप सभी लोगों से एक इल्तिजा करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का लिंक जो है आपके भाई बहन रिलेटिव्स जो भी है उनसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। Well, I'm joined by Sabitha Angel, if I'm not wrong. I hope I am pronouncing your name correct, Sabitha. I'm joined by Tabitha. Good afternoon, sir. I'm your student from Sri Lakshmi High School. Well, very happy to welcome you. Thank you very much. Want me to welcome you to my domain, Tabitha. Thank you very much for joining me live today, and thank you very much for your joining me today. I really appreciate your joining today. I really appreciate your answer, Tabitha. Thank you very much. How are you doing today, Tabitha? How are you doing today? Please answer the simple question of mine and get connected with me. How are you doing today? I am doing pretty well today. Welcome. Thank you very much for extending welcome to me. Tabitha, thank you very much. I'm on cloud 9. I am ecstatic. I'm extremely delighted that you've joined me live today. Thank you very much. Happy to see you. Marvin, to welcome you to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Answer the simple question of mine and get connected with me, Tabitha Angel. And the question is, how are you doing today? I am doing pretty well today. What about you, sir? How about you, sir? Okay. Hope
Tabitha got my question wrong. She answers my question by saying degree second year. Well, I wasn't talking about your studies. I wasn't talking about your education. I was talking about your states. My question is, how are you doing today? I am doing pretty well today. Answer my question by typing this message to me. I'm doing pretty well today. Thank you very much, Tabitha, for joining me live today. Tabitha happens to be one of my old students. She's from the school where I worked earlier for more than 17 years as a spoken English tutor. And Tabitha Angel is degree second year right now. She is pursuing degree second year. Yes, Tabitha. How are you doing today, Tabitha? Answer my question. I am doing pretty well today. What about you, sir? Or, I am doing pretty well today. How about you? Tabitha, have you had your lunch, my dear? Have you had your lunch? Have you had your lunch? Answer the simple question of mine. Have you had your lunch, Tabitha Angel? Yes, sir. I have had my lunch. No, sir, I have not had my lunch. Tabitha answered my question by saying, yes, sir. Right. Happy to hear that, Tabitha. Yes, sir, I have had my lunch. Tabitha, where are you from? Where are you from? Are you from Colonel? Are you from Colonel? Are you from Thunderbird? Are you from B Thunderbird? Are you from this place or that place? Where are you from? Yes, sir, I had my lunch. Very happy to hear that. Tabitha, I always ask my students, I always ask my listeners to answer my question F-U-L-L-Y fully. I'm really very happy to hear that from you, Tabitha. Yes, sir, I had my lunch. And Tabitha answers my question by saying, I'm from Colonel, sir. I'm from Colonel. I am from Colonel. Right, very good. You are coming to the right track now. Tabitha, here is another simple question. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Tabitha, how old are you? Well, you are pursuing degree second year right now. So, 10th, standard 10th. By the time you come out of standard 10th, you would be somewhere around 14 to 15 years old. Followed by intermediate first year and second year. So then you would be somewhere around 17 years and you are pursuing degree second year right now. You might be 19 years old. How old are you, Tabitha? Did I guess your right? Did I guess your age right? Did I guess your age correct, Tabitha? Answer my question. How old are you? Are you 19 years old now? Or 18 years old now? How old are you, Tabitha? I am 19 years old. I am 18 years old. Oh gosh. Tabitha is 20 years old now. Happy to hear that. Tabitha is 20 years old now. Okay, well, thank you very much, all you people out there. Thank you, Tabitha. And thank you, Ganesh. And thank you, Shamshad. And thank you, Salim. I really appreciate all you people joining me live today. It's time for me to call it a day. It's time for me to say bye. Do take a very good care of yourself. Thank you very much.